Hey kids, very good morning to all. Welcome to Shivaji Group of Institution, Lisbagya Preschool online classes. Today's date is 14 July 2020 and day is Tuesday. Hey kids, welcome to your class. As you all know, we start our day with recitation. So kids, let's start an English rhyme, Johnny Johnny. Kids, stand up on your place wherever you are and put your hand on your waist and let's start. Johnny, Johnny, yes Papa. Repeat after me. Johnny, Johnny, yes Papa. Eating sugar, no Papa. Eating sugar, no Papa. Telling a lie, no Papa. Telling a lie, no Papa. Open your mouth, ha ha ha. Open your mouth, ha ha ha. Kids, repeat it again. Johnny, Johnny, yes Papa. Johnny, Johnny, yes Papa. Eating sugar, no Papa. Telling a lie, no Papa. Open your mouth, ha ha ha. Kids, I hope you have enjoyed this rhyme. Repeat it many times. Thank you. Hey kids, this is your English oral class. And today we are going to learn phonetics K to T. आज हम क्या पढ़ेंगे? Phonetics K to T. In our last class, we have learned phonetic A to J. Let's start kids. Mr. K. Mr. K क्या sound करते हैं kids? Mr. K says ka 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 kite. Mr. K says ka 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 kite. Mr. L says la 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 lion. Mr. L says la 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 lion. Mr. M says mama mama monkey. Mr. M says mama mama monkey. Mr. N says na 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 nest. Mr. N says na 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 nest. Mr. O says o o o orange. Mr. O says o o o orange. Let's revise. Mr. K says ka 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 kite. Mr. L says la 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 lion. Mr. M says mama mama monkey. Mr. N says na 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 nest. And Mr. O says o o o orange. Now Mr. P says. Mr. P says pa 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 parrot. Mr. P says pa 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 parrot. Mr. Q says qua 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 queen. Mr. Q says qua 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 queen. Mr. R says ra 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 rabbit. Mr. R says ra 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 rabbit. Mr. S says sa 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 sun. Mr. S says sa 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 sun. Mr. T says ta 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 tiger. Mr. T says ta 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 tiger. Let's revise one more time. Mr. P says pa 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 parrot. Mr. Q says qua 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 queen. Mr. R says ra 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 rabbit. Mr. S says sa 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 sun. Mr. T says ta 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 tiger. Yes? Learn it well. Thank you. Hey kids, welcome to your class. That is English written. Kids, open your English notebook where I have done the setting of 14 July 2020. Day is Tuesday. Kids, yesterday we have learned to draw the formation of A and B in the block. I hope you have learned it. Kids, today we will learn to draw the formation of C and D. Kids, as you all know that we have to touch the upper line and bottom line to make the formation of C. Let's start kids. Round and stop make C. 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 Kids, you have to remember one more thing.
that the formation of any alphabet or any number should not be drawn on outside the blocks. Round and stop, make C. 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 Again, round and stop, make C. Round and stop, make C. Kids, again I am repeating, you have to touch the upper and bottom line both carefully. Round and stop, make C. Round and stop, make C. Now kids, let's move to the next page. D. D says duck. One man, one big fat stomach, make D. And D says dog. Let us learn to draw D. One man, one big fat stomach, make 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 D. D says dog. One man, one big fat stomach, make D. Kids, the formation of D should not be drawn outside the blocks. One man, one big fat stomach, make D. One man, one big fat stomach, make D. One man, one big fat stomach, make D. Again, one man, one big fat stomach, make D. Kids, आप देखिए मैंने अपर लाइन और बॉटम लाइन दोनों को टच कराकर लिखा है और लाइन से बाहर नहीं लिखा है. आपका कोई भी फॉर्मेशन लाइन के बाहर नहीं होना चाहिए. One man, one big fat stomach, make D. 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 C says cat and D says duck. Kids, now I have done my work. Now it's your turn. Practice it well. Thank you. Hey kids, now this is the time for Hindi recitation. So today we will recite a Hindi rhyme. Kids, today we will recite this rhyme from the syllabus. So first of all, stand up in your place wherever you are and put your hand on your waist. Let's start, kids. Make a fish with your hand. मछली जल की रानी है, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है. Repeat after me. मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है. हाथ लगाओगे तो डर जाएगी, हाथ लगाओगे तो डर जाएगी, बाहर निकालोगे तो मर जाएगी, और पानी में डालोगे तो तैर जाएगी. So kids, let's sing this rhyme like a song. Okay, let's start. मछली मछली जल की रानी है. Repeat after me.
मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओगे तो डर जाएगी, बाहर निकालोगे तो मर जाएगी। पानी में डालोगे तो तैर जाएगी, पानी में डालोगे तो तैर जाएगी। रिपीट आफ्टर मी किड्स। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओगे तो डर जाएगी, बाहर निकालोगे तो मर जाएगी। पानी में डालोगे तो तैर जाएगी, पानी में डालोगे तो तैर जाएगी। Kids, I hope you have enjoyed this rhyme. Practice it well and repeat it many times. Thank you. Hey kids, let's start our Hindi oral class. Kids, today we will learn हिंदी स्वर आ से आहा। आज हम क्या पढ़ेंगे? आ से लेकर आहा तक स्वर पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज दिस किड्स? ये क्या लिखा है? छोटा अ, छोटे अ से अनार, छोटे अ से अनार। बड़े अ से आम, बड़े अ से आम। किड्स, बच्चों, आपको अक्षर को अच्छे से पहचानना होगा। हम आपको नेक्स्ट टाइम चित्र बनाकर यहाँ पर बताएंगे और आपको उस चित्र को देखकर इसका पहला अक्षर बताना होगा कि ये कौन सा चित्र बना हुआ है और ये किस अक्षर से रिलेटेड है। लेट्स स्टार्ट किड्स। छोटा अ, छोटे अ से अनार, बड़े अ से आम। छोटी ई, छोटी ई से इमली, छोटी ई से इमली। बड़ी ई, बड़ी ई से ईख, बड़ी ई से ईख। छोटा उ, छोटे उ से उल्लू। लेट्स रिवाइज वन मोर टाइम किड्स। छोटा अ, छोटे अ से अनार, बड़े अ से आम। छोटी ई, छोटी ई से इमली, बड़ी ई, बड़ी ई से ईख। छोटा उ, छोटे उ से उल्लू। अब आते हैं नेक्स्ट लाइन में। बड़ा ऊ, बड़े ऊ से ऊन, बड़े ऊ से ऊन। री से ऋषि बाबा, री से ऋषि बाबा। ए से एड़ी, ये क्या है बच्चों? ए से एड़ी। ए से ऐनक, बड़े ऊ से ऊन, री से ऋषि, ए से एड़ी, ऐ से ऐनक। अब ओ, ये क्या लिखा है बच्चों? ओ, ओ से ओखली, ओ से ओखली। बड़े ऊ से ऊन, री से ऋषि, ए से एड़ी, ऐ से ऐनक, ओ से ओखली। नेक्स्ट किड्स, हम नेक्स्ट लाइन में आते हैं। औ से औरत। इसमें देखिए बच्चों, वन एक ही मात्रा लगी है, इसमें कितनी मात्रा है? दो। तो ये क्या है? बड़ा औ, बड़े औ से औरत। अंग से अंगूर, अंग से अंगूर। और आहा अक्षर खाली, आहा अक्षर खाली। लेट्स रिवाइज वन मोर टाइम किड्स। छोटे अ से अनार, बड़े अ से आम। छोटी ई से इमली, बड़ी ई से ईख। छोटे ऊ से उल्लू, बड़ा ऊ, बड़े ऊ से ऊन। री से ऋषि बाबा, ए से एड़ी, ऐ से ऐनक, ओ से ओखली। औ से औरत, अंग से अंगूर, आहा अक्षर खाली। किड्स, लर्न इट मेनी टाइम्स। थैंक यू। Hey kids, welcome to your next class and that is Hindi written. Kids, take out your Hindi notebook and open the page where I have done the setting of 14 July 2020 and day is Tuesday. Kids, yesterday we have learned to draw the formation of Chota A se Anar and Bada A se Aam. Kids, now today we are going to revise those two alphabets. आज हम हिंदी स्वर के जो हमने पहले स्वर पढ़े थे और लिखना सीखा था, आज हम उन्हीं स्वर को दोहराएंगे। छोटे आ से अनार एंड बड़े आ से आम। So let's start kids. As you all know, we have to touch the upper and bottom line both. Let's start kids. Curly whirly tree and up one man. हेलो हेलो मेक अ हेड। छोटे आ से अनार। कर्ली वर्ली ट्री एंड वन मैन
hello, hello, make a hat. Curly Wurly, 3 and up, 1 man, hello, hello, make a hat. Curly Wurly, 3 and up, 1 man, hello, hello, make a hat. Curly Wurly, 3 and up, 1 man, hello, hello, make a hat. Curly Wurly, 3 and up, 1 man, hello, hello, make a hat. Curly Wurly, 3 and up, 1 man, hello, hello, make a hat. किड्स आप देख रहे हैं हमने ब्लॉक से अपर लाइन और बॉटम लाइन दोनों से टच करा के अक्षर बनाया है और ब्लॉक के बाहर ड्रॉ नहीं किया है। आपको भी सेम वर्क करना है। कर्ली वर्ली 3 and up, 1 man, hello, hello, make a hat. नाउ अब ये क्या लिखा है बच्चों? बड़े से आम। कर्ली वर्ली 3 and up, 1 man, 2 man, hello, hello, make a hat. और आपको हमने इसमें बताया है कि इसमें आपको क्या करना है, सिर्फ 1 मैन से हेलो हेलो कराना है, 2 मैन से हेलो हेलो नहीं कराएंगे। कर्ली वर्ली 3 and up, 1 man, 2 man, हेलो हेलो, make a hat. कर्ली वर्ली 3 and up, 1 man, 2 man, हेलो हेलो, make a hat. कर्ली वर्ली 3 and up, 1 man, 2 man, हेलो हेलो, make a hat. Curly Wurly 3 and up, 1 man, 2 man, hello, hello, make a hat. Curly Wurly 3 and up, 1 man, 2 man, hello, hello, make a hat. Curly Wurly 3 and up, 1 man, 2 man, hello, hello, make a hat. Curly Wurly 3 and up, 1 man, 2 man, hello, hello, make a hat. तो बच्चों आज हमने क्या रिवाइज किया? आज हमने छोटे से नार और बड़े से आम रिवाइज किया। Kids, now I have done my work. Now it's your turn. Practice it well. Thank you. Hey kids, welcome to the next class, and that is maths written. Kids, take out your maths block notebook and open the page where I have done the setting of 14 July 2020 and day is Tuesday. Kids, yesterday we have learned to draw the formation of 1 and 2, and today we are going to learn to draw the formation of 3 and 4. Kids, as you all know that we have to touch the upper line and bottom line both carefully. And kids, you have to remember one more thing, that the formation of 3 and 4 should not be drawn outside of the block. Okay, let's start. Curly Wurly 3, round and round, Curly Wurly 3. Round and round, Curly Wurly 3. देखिए किड्स, हमने ब्लॉक से बाहर नहीं निकाला है फॉर्मेशन को। आप भी फॉर्मेशन को ब्लॉक के बाहर नहीं ड्रॉ करेंगे। राउंड एंड राउंड कर्ली वर्ली 3, 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 round and round curly wurly 3, round and round curly wurly 3. Kids, now I am repeating again that you have to touch the upper and bottom line both. Round and round curly wurly 3, 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 round and round curly wurly 3. Kids, now open the next page. The formation of 4. Let's start. One man, hand out, cut, policeman 4. 1 man, hand out, cut, policeman 4. 1 man, hand out, cut, policeman 4. 1 man, hand out, cut, policeman 4.
1 man, handout, cut, policeman, 4. 1 man, handout, cut, policeman, 4. 1 man, handout, cut, policeman, 4. 1 man, handout, cut, policeman, 4. 1 man, handout, cut, policeman, 4. 1 man, handout, cut, policeman, 4. 1 man, handout, cut, policeman, 4. 1 man, handout, cut, policeman, 4. 1 man, handout, cut, policeman, 4. 1 man, handout, cut, policeman, 4. 1 man, handout, cut, policeman, 4. Now kids, I have done my work. Now it's your turn. Practice it well. Thank you. Hey kids, let's move to maths oral class. Today we will learn counting 1 to 20. So let's start kids. Start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 0, 10. Kids, you have to repeat after me. So let's start one more time. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 0, 10, 1, 1, 11, 1, 2, 12, 1, 3, 13, 1, 4, 14, 1, 5, 15, 1, 6, 16, 1, 7, 17, 1, 8, 18, 1, 9, 19, 2, 0, 20. Kids, let's repeat one more time. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 0, 10, 1, 1, 11, 1, 2, 12, 1, 3, 13, 1, 4, 14, 1, 5, 15, 1, 6, 16, 1, 7, 17, 1, 8, 18, 1, 9, 19, 2, 0, 20. Kids, repeat it many times so that you can learn it well. Hey kids, welcome to our next class, and that is conversation. As you all know, conversation is an oral subject. So kids, let's start. Kids, yesterday in our last class we have learned about 2 questions about myself, and today we are going to learn again 2 questions. So let's start, kids. Kids, if someone asks you that in which class do you study or which class do you study, then what you have to say? You have to say that I study in class playgroup, because this is your class name. What? Playgroup. आप किस क्लास में पढ़ते हैं? क्लास प्ले ग्रुप में पढ़ते हैं और पीजी. ओके, सो यू हैव टू से आई स्टडी इन क्लास प्ले ग्रुप. किड्स, इन विच क्लास डू यू स्टडी? You have to say I study in class play group. Repeat after me. In which class do you study? I study in class play group. And now next question is, if someone asks to you that what is your school name, कि आपके स्कूल का नाम क्या है, then you have to say that my school's name is Liz Bagya Preschool. मेरे स्कूल का नाम क्या है? Liz Bagya Preschool. Repeat after me, kids. What is your school's name? My school's name is Liz Bagya Preschool. What is your school's name is? What is your school name? My school's name is Liz Bagya Preschool. Kids, let's revise one more time. In which class do you study?
When someone asks to you, in which class do you study? What will have to say? We have to say that I study in class playgroup. I study in class playgroup. And what is your school name? My school name is Les Badia Preschool. Kids, this class over. We will meet tomorrow.